As a fundamental investor, we spend hundreds of hours researching microcap companies trying to answer one big question. Will the business scale? And will the promoter actually back in when it does? क्या ये business scalable है और क्या management इसे scalable करेगी और अपना effort डालेगी जब ये उस growth phase में आती है, जहां से इसे scale करना और भी आसान होता है, क्योंकि किसी भी business में एक inflection point होता है और उस समय प्रमोटर का लॉक इन होना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बट हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं जिसने ऐसे दो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स को झेला है, लिटरली झेला है, बिकॉज ये एक एनबीएफसी है और आज से 2 साल पहले इस एनबीएफसी का लाइसेंस आरबीआई ने ऑलमोस्ट कैंसिल कर दिया था। दैट वॉज वन इन्फ्लेक्शन पॉइंट। दूसरा इन्फ्लेक्शन पॉइंट अभी 6 महीने पहले आया जब इसकी कोर फाउंडिंग टीम, जो कि पिछले 3 साल से इसे ड्राइव कर रही थी, जो बहुत ही अच्छा ग्रो कर रही थी इसके अपने लेंडिंग बिजनेस को, उसकी ऑलमोस्ट 30% पीपल इंक्लूडिंग द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, दोनों alongside 20+ अदर एम्प्लॉइज, ओवर नियरली 60 एम्प्लॉइज में से 20+ एम्प्लॉय रिजाइन कर देते हैं वन फाइन डे। सो एक एम्प्लॉय एक्सोडस हो जाता है और ये कंपनी अपने भाव से बहुत ही कम रेट पे अवेलेबल मिल जाती है। बट एक सवाल ये होता है कि लेंडिंग बिजनेस में कि हॉर्स इंपॉर्टेंट है या जॉकी इंपॉर्टेंट है। जो वेंचर कैपिटल में लोग जॉकी पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, बट क्या ये कंपनी जिसके बारे में आज बात करने वाला हूं वो वेंचर कैपिटल मोड में है, यानी अर्ली ग्रोथ फेज में है, या स्केलेबल ग्रोथ फेज में आ चुकी है? सो इसी सवाल का आंसर करेंगे इस वीडियो में। और उससे पहले एक मेंटल मॉडल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो हमारे फेवरेट वॉरेन बफेट महाशय का है। उन्होंने कहा था कि ऑलवेज इन्वेस्ट इन अ बिजनेस विच अ फूल कैन रन, बिकॉज सम डे अ फूल विल रन इट। सो इसी थॉट के साथ हम स्टार्ट करते हैं। और ये मेंटल मॉडल मैंने अप्लाई किया जब इस कंपनी में एक्सोडस हो रहा था, जब सीईओ वर going out and they were cashing in। कंपनी का नाम है SG Finserve। Most of the time retail investor get trapped hoping for luck, but true wealth creation is about identifying structural strategic imperative। तो आज हम ऐसे ही एक structural strategic imperative की बात करेंगे, not at the SG Finserve level, but at a promoter group level, which is APL Apollo Group। So today we are deep diving into SG Finserve। So if you have been part of our community, you know our original thesis was dead simple. As the profit pool of the business expands, the promoter group at APL Apollo would eventually take a deeper, more direct strategic interest। Today that exact thesis has playing out in real time. The major management shift in June 2026 filing and why this business model is built to scale। So पहले हम लोग बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं जो हमने आज से 1-1.5 साल पहले अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर किया था, एंड देन विल गिव यू एन अपडेट अबाउट जून 2026 में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण मैं इस कंपनी में पोजीशन बिल्ड कर रहा हूं अगेन। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ SG Finserve के बारे में बात करने वाला हूँ। Why I'm talking about an NBFC? Because I think the time for an NBFC is right because we are in a rate reduction cycle। So अभी RBI ने अभी 4-5 दिनों पहले 25 बेसिस पॉइंट से अपने रेपो को रिड्यूस किया है। सो वी आर इन अ रेट रिडक्शन साइकिल। सो इस समय जो फाइनेंसिंग कंपनीज होती हैं दे सीम्स टू डू बेटर देन अदर कंपनीज। हालांकि लो इंटरेस्ट रेट का फायदा तो पूरी इकोनॉमी को होता है, बट जो डिले इन पासिंग ऑन द इंटरेस्ट रेट कट वो होता है इन केस ऑफ बैंक्स एंड एनबीएफसी, बिकॉज वो उनके लिए कॉस्ट ऑफ फंड तो इंस्टेंटेनियसली कम हो जाता है बिकॉज दे आर टोटली गवर्न्ड बाय आरबीआई प्रोसेसेस एंड ऑल। बट वो उनके जो कस्टमर होते हैं उनको वो पास ऑन करने में थोड़ा सा डिली डेलिंग करते हैं। बहुत बार वो कस्टमर रिक्वेस्ट का वेट करते हैं जो कस्टमर उतने सेवी नहीं होते हैं। सो एक ट्रांसमिशन में डिले होता है, ट्रांसमिशन में कभी कभी 6 महीने 4 महीने टाइप का डिले होता है। तो ड्यूरिंग दोज 4 मंथ्स अगर आपको 25 बेसिस पॉइंट का फायदा हो रहा है और इफ यू टोटली मेक लेट्स से 4% ऑफ स्प्रेड, सो उस पर 25% इज क्वाइट अ मीनिंगफुल अमाउंट फॉर लेट्स से 3 months 4 months और वट एवर डेज। सो दैट्स वाई एनबीएफसी बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग प्ले। एंड मैं आपके साथ एक एनबीएफसी के बारे में बात कर रहा हूँ, SG Finserve, विच इज पार्ट ऑफ संजय गुप्ता ग्रुप, विच इज APL Apollo ग्रुप। हिज फाउंडर नेम इज संजय गुप्ता। तो SG स्टैंड फॉर संजय गुप्ता और उनके बेटे रोहन गुप्ता इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी। सो दिस इज एन इमर्जिंग एनबीएफसी विच इज अ प्रॉक्सी ऑन APL Apollo। APL Apollo डिस्कवर्ड स्टॉक। सो साधन की स्पेशलिटी रही है कि हम लोग ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो कि थोड़े से अंडर डिस्कवर्ड हो। दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, दिस इज जस्ट शेयर हेयर फॉर your understanding of an NBFC which is
evolving and which is a very robust NBFC. So business side में मैं बात करूंगा, so that if you have to make a decision then you can consult your financial advisor. So SG Finserve was acquired. It's not a organically created entity by Sanjay Gupta and family. So this was earlier called Mungipa Limited, which was a non-related entity, got acquired by promoter family of APL Apollo Tubes in 2022. जब संजय गुप्ता ने एक्वायर किया, उनका पर्पस क्या था एक्विजिशन का कि एपीएल अपोलो इज अ बिग कॉन्ग्लोमरेट, तो उनकी सप्लाई चेन में बहुत सारी कंपनीज थी जो छोटी होती है बाय डिजाइन, बिकॉज एसएमईज भी सप्लाई करती हैं टू एपीएल अपोलो ग्रुप्स, तो उन्हें वर्किंग कैपिटल की दिक्कत हो रही थी, इसीलिए उन्हें सपोर्ट देने के लिए देयर वाज अ नीड ऑफ अ सप्लाई चेन फाइनेंसर एंड डीलर साइड में भी एक फाइनेंसर की जरूरत थी, क्योंकि जब आप एपीएल अपोलो कुछ प्रोड्यूस करती है, वो पाइप्स उन्हें देती थी, तो उन्हें परचेज करने में कभी कभी चैलेंज होती थी बिकॉज दे डिडंट हैव फंड्स to buy from APL Apollo. So APL Apollo group को benefit हो रहा है इस transaction से, that's why they wanted to have a supply chain partner and that's why they found this company and that's why they identified this gap in dealer side channel financing, so that's why they got into this in 2020. So this company has focused on structured lending. This is not a plain vanilla lending जिसमें कि आप कहीं पे गए और आपने अपना सिबिल स्कोर बताया और आपका सैलरी स्लिप आया, उसके बेसिस पे किसी ने लेंडिंग कर दी. दिस इज मोर ऑफ दैट यू आर सप्लाइंग टू अ कंपनी. वो कंपनी कोई थर्ड पार्टी कंपनी है, जैसे एपीएल अपोलो इन दिस केस, मतलब एपीएल अपोलो और एसजी फिनसर्व यानी जो लेंडर है उसके बीच में एक एग्रीमेंट है जिसे स्टॉप गैप अरेंजमेंट कहते हैं, तो उसके बेसिस पे लेंडिंग हो रही है. सो दिस लेंडिंग इज डन इन अ स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड लेंडिंग. दिस इज नॉट प्लेन वनीला लेंडिंग. सो दिस इज नॉट फिजिबल फॉर एनीबडी टू डू दिस बिजनेस, क्योंकि उसके लिए उन्हें एक एंकर के साथ एक अरेंजमेंट करना पड़ेगा, एक कॉम्पिटिटिव कॉस्ट ऑफ फंड होना चाहिए जो कि इस ग्रुप का है, बिकॉज दे आर रेटेड एज AA, credit enhanced by support from SG Group, which is Sanjay Gupta Group, APL Apollo की corporate guarantee है, that's why this is rated as AA. They are anchored to top tier corporates with a business model that is conservative. That is one thing which is a highlight for me, because इसमें आप जो है हाई टॉप रेटेड कॉर्पोरेट के साथ ही डील कर रहे हैं, उनकी गारंटी आपको मिली हुई है एक तरीके से, implied guarantee is there. So this is conservative in approach and scalable, because you can go to APL Apollo, go to Tata Steel, you can go to any group, Asian Paints, and then you can fund to their dealer, their supplier, their network, their customer, anybody. So this is scalable. That's why it requires further capital infusion. So first round of funding जो हुई थी वो 715 करोड़ की हुई थी, जिसमें 350 करोड़ प्रोमोटर से आए और बाकी जो फंडिंग आई उसमें कुछ नॉन इन्वेस्टर भी थे. फॉर एग्जाम्पल आशीष कोचोलिया वॉज देयर सिंस देन सेकेंड राउंड 2024 में आई, उसमें भी 400 करोड़ का उन्होंने कैपिटल रेज किया. तो टोटल कमिटेड कैपिटल इंक्लूडिंग वारंट टिल नाउ इज 1350 करोड़, बिकॉज एडिशनली दे हैव रेज्ड अ वारंट ऑफ 400 करोड़. दिस इज न्यू फंड रेज. सो इस फंड रेज से ये कंपनी जो है उतनी रोबस्ट होती जा रही है, बिकॉज इसकी जब हम लेंडिंग बुक की अगर हम बात करेंगे तो देखेंगे कि इनके पास दे हैव ह्यूज स्कोप टू ग्रो. बट बिफोर वी गो देयर, लेट्स अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल फर्दर. आई हैव दिस कंपनी इज in the supply chain financing segment, especially in the distributor dealer side. So dealer side पे ज़्यादा है, supplier side पे कम है. So more of a market side. So this company SG Finserve Group is more on the market facing entity है. So that's why they have vertically integrated into lending on the market facing rather than on the backward integration side. नहीं है, forward integration side में ये supply chain ज़्यादा funding देते हैं. 85% of its loan supply chain financing, बाकी 15% है वो other structured lending है, like lease rental discount, which is basically कॉमर्शियल रियल स्टेट के जो लीज आते रहते हैं उसको डिस्काउंट करते हैं. जैसे अगर आपको 100 करोड़ की लीज हर साल आ रही है, तो आप 5 साल में 500 करोड़ आएंगे, तो आप हो सकता है उसका 80% जो टाइम वैल्यू उसकी होती है उतने तक की आप लोन ले सकते हैं, यानी 400 करोड़ की आप लीज रेंटल डिस्काउंटिंग फैसिलिटी ले सकते हैं. तो उसमें एक बहुत ही सिक्योर्ड लेंडिंग होती है, तो वो भी सिक्योर्ड एंड प्रॉपर्टी बैक्ड लोन्स है, वो भी सिक्योर्ड लेंडिंग है. सो आरबीआई बोलती है कि जितने आप सिक्योर्ड लेंडिंग करोगे उतना अच्छा है, उतना एसेट बैक्ड है उतना ही अच्छा है आरबीआई के डेफिनेशन से. सो इसको वो चैलेंज नहीं है. बिजनेस मॉडल इज रोबस्ट. एवरेज लोन पीरियड जो है वो सिर्फ 35 डेज का है, तो इट्स नॉट वेरी हाई. तो इसमें जो क्रेडिट रिस्क है वो बहुत ज्यादा नहीं है, काफी डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि एवरेज टिकट साइज इज जस्ट 1 to 2 करोड़. तो 2 करोड़ के लोन है जो 35 दिन में वापस आ जाते हैं. तो अगर आप 100 करोड़ की बुक से स्टार्ट कर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि आप 50 लोगों को एक बार में लोन दे सकते हैं, और एवरी 35 डे यू कैन रिपीट दिस साइकिल. सो यानी एवरी मंथ आप रिपीट कर सकते हैं. तो आप
एक ही इंसान को, एक ही कॉर्पोरेट को उसके दूसरे ट्रांजैक्शन के लिए 10 से 11 बार लोन आप उसको सेम बंदे को दे सकते हैं। तो एक बार अगर कस्टमर आपने एक्वायर कर लिया तो उसके साथ रिपीट बिजनेस है। सो दिस इज अ वेरी रिपीटेबल बिजनेस, दैट इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि सिर्फ 35 डेज में आप टर्न कर रहे हैं। एंड एज आई से दिस इज ऑन द कस्टमर साइड, not on the vendor side. So they do not engage with vendors, avoiding areas where payment cycles are more volatile. तो जहाँ पे payment cycle established हैं, so their partners are like Tata Steel, Tata Motors, MG Motors, and Oppo was their client and all those things. So they have a credit cycle which is established. फॉर एग्जाम्पल आई वर्क इन टाटा मोटर्स, तो हमारा एक 60 डेज का क्रेडिट साइकिल होता था, जिसे हमने ड्यूरिंग 2008 क्राइसिस टाइम में 90 डेज कर दिया था। तो बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में जब अगर फंडिंग की दिक्कत होती है, फाइनेंशियल क्राइसिस थी, तो हमने उसको 60 to 90 किया था, बट दिस वाज नॉट फ्लिकरिंग, सो बट इवेंचुअली आई थिंक इट केम बैक टू 60. सो देयर इज नो अनसर्टेनिटी, तभी ये मॉडल वर्क करेगा, बिकॉज इफ यू डोंट हैव व्यू ऑन द एंकर कि एंकर कितने दिनों में पे करेगा, तब आपका मॉडल वीक हो जाता है अगर यू आर डीलिंग विथ अ मोर वोलेटाइल सप्लाई साइड। सो ये प्रॉब्लम जनरली सप्लायर साइड में होता है, बट ऑन अ डीलर साइड ये प्रॉब्लम कम होता है। सो दिस स्ट्रक्चर रिलाइज ऑन लेंडिंग टू बिजनेसेस अंडर द अम्ब्रेला ऑफ हाईली रेटेड एंकर्स, इंश्योरिंग लो रिस्क। अब कंपनी की ऑपरेशनल मैट्रिक्स हम देखें तो टोटल लोन डिस्बर्स्ड सो फार इज 38,000 crores. So the company have a total 40 anchors, 40 plus anchors who are helping this company grow. The average cost of borrowing of raising fund is 8 to 8.5%. So because thanks to the credit rating of AA, and ये 8 and 8.5 पे borrow करते हैं, और 4% का net ये spread बना करके roughly वो उनको दे देते हैं 12.5%, which is the lending rate, and against the borrowing of 8. So net 4% spread, which is very good. This ensures very good net interest margin for the company. So that is the target spread of 4%. अगर हम लेटेस्ट नंबर देखें तो कंपनी हैज डन बेटर इन दिस क्वार्टर 3 FY24. दे हैव डन टोटल ग्रॉस डिस्बर्समेंट ऑफ 4,625 crore अगेंस्ट लास्ट ईयर 3,698. सो मोर 25% ऑफ ग्रोथ on the book side, and return on asset is 8%, which is healthy, which is in last quarter as 7.86, which has grown from 7.29. So roughly 50 basis point का जो है ROA में increase हुआ है, which is good. रिटर्न ऑन इक्विटी में 45% का ग्रोथ है, जो कि 6.6% से बढ़ के 9.54 हुआ है, which is not that great. Ideally it should range into 13 to 15, 16% to become a respectable NBFC. So this is a journey which they have to travel, and I'll let you know, मैं explain करूँगा how they will reach there. And even management has explained this in the con calls. So if you go in the next slide, then we'll notice that the number of active borrowers is 500 plus. Average ticket size is 50 lakh to 5 crore. On an average 1.5 to 2.5 crore is the average ticket size. They just have 60 employees. So this company is dependent on technology. So it's a small company, but with good fintech capabilities, which they are developing over the year. And recently they have invested some meaningful amount towards the purchasing of software, which is required to become an active and fast lender. So the team is mostly has come from corporate banking background. They are planning to increase the headcount to 75 because they are targeting 600 crore AUM. Even though they are currently at 2,250 crore of loan book, which is supported by 60 employees. Even though if you go to 6,000, the headcount would increase by another 15, which is 20%. Cost of software and everything, तो चलो वो तो आपको बढ़ना ही है, वो तो है ही, but headcount cost जो है employee cost, which is just going by 25% up, but the AUM is almost doubling, more than double, is 2.5%. So 2.5x growth into loan side on the loans, but against 25%. So income भी 2.5x होगी because assets are growing, but the cost would grow at 25%. So this is a short term phenomena. बिकॉज आगे जाकर के कॉस्ट टू इनकम स्टेबलाइज हो जाएगा जब 75 हेड काउंट हो जाएंगे, 6,000 का वो बेस पकड़ लेंगे तब. करेंटली इन्होंने 5,000 करोड़, एज वी सॉ इन द लास्ट स्लाइड, दे आर टारगेटिंग 5,000 करोड़ एनुअल डिस्बर्समेंट रन रेट.
given some guidance which we should take note of. I've been working over last 5 years on investing and talking about how to pick multi-baggers, how to build up a portfolio, and I'm trying to build a institutional quality understanding of market to retail investors. So in this mentorship program, what I bring forth is my experience as a project manager, my experience as a structured finance professional, as a project finance professional, at a bond market participant. So my experience is not just as an equity analyst. What you get here is a whole hog, a complete view when you learn from me. So whatever I've learned in last 15-17 years, I'll be sharing in the course. So you'll get a recorded content of around more than 100 hours. Overall, the structure is that I'll talk about initially about the foundation, then I'll teach how to do the financial analysis so that you can select the good players from the bad ones. Then I'll share my toolkit, how I do it. I have developed Excel, which will help you to do your analysis, like Sadhan Kavach, DOL calculator, Sadhan ROIC shift, and all those things I share is whatever proprietary I have developed. Then once you are equipped with that, then I'll take you to the business cases. So business analysis, how to pick businesses, how to understand, deep dive into sectors, how to identify new sectors for sector rotation, let's say. Then once you develop the business analysis, the financial analysis, then I share the frameworks which I carry and which investment gurus like Charlie Munger, Phil Fisher, or Peter Lynch, Warren Buffett talks about. Those investment frameworks are shared with you so that you develop your own investment framework. Alongside, I also talk about the behavior finance discipline which you need to develop to keep multi-baggers roaring. If you are really passionate and really want to put effort to learn this art directly from me, then this course is meant for you. So if you are willing to join me in this journey of mentorship program, then you can check the link in the description. Join me in my journey. FY25 में they are saying that they will grow to 2,500 crore, then FY26 में 4,000 crore and then 6,000 crore. 2 साल में 6,000 crore पहुंचना इन्हें. Currently the PAT is around 80 odd crore. This would go to roughly more than 3.3x हो जाएगा as per their guidance in 2 years. ROA target of 5.5 to 7%. ROA estimate is 15 to 18%, which is an ambitious ROE. And if they achieve it, then Street would definitely take a note of it. This company started doing con calls for last 2 quarters. So उन्होंने पूछा कि आप 18% ROE कैसे achieve करोगे? They have given a breakdown of their plans. So they are saying that they are looking at a loan book of 6,000 crore. उसमें से 15 करोड़ की इक्विटी होगी, 1500 करोड़ की, which would have a 13% ROE. Pure play return on equity अगर वो ढंग से करे तो 13% की होगी. So उससे 13% of 1500 crore would bring 200 crore annually. So 500 crore जो लोन से आ रहा है उसमें वो they are saying 4% they will make. So this would be 190 odd crore. So if we add these 200 initially from equity plus 200 on debt, so total 400 crore का top line they are expecting, out of which cost would be total 20 crore. So the PBT would be roughly 400 minus 20 odd crore. So 380 crore would be the PBT in FY27. So PAT would be 270 and the base would be 1500 crore. So equity would be 1500 crore. So 380 divided by 1500 crore would be roughly 18%. So this is their ROE calculation, which if it goes right, then this would be a huge trigger. So we'll have to watch out for this. So if they achieve this guidance, that would be a superb performance in my opinion. Because currently कोई भी NBFC इतनी well placed नहीं है, because every NBFC to make 18% ROE they have to take risk, and this company has a very robust business model. Supply chain financing कर रही है जो low risk environment है, so वहाँ पे cash flow based lending करते हैं ये, so वहाँ पे risk कम है. And if somehow the industry cycle becomes favorable, then they can generate better ROE also because the churn would be better. What are the growth triggers? So growth trigger number 1 is the anchor book is growing. Every month they are adding new anchors. So 40 plus anchors they are trying to increase to 60. Every anchor is a big name actually. So FY27 they are targeting to 80 plus, and they will further gain shares from existing anchors. And now that they have changed, they want to change this disbursement strategy that they will move increasingly to tier 2, tier 3 markets, जहाँ पे ज़्यादा आपको yield मिल सकता है. So NIM would become better if they expand it with more anchors. But if they go further down in the value chain, अगर supply side में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी scope है. But risk we have to take care of. So diversification की तरफ ये company move कर रही है, because so far this was termed as a APL Apollo value chain company, and it has around more than 70% exposure to APL Apollo ecosystem.
उसको वो टारगेट कर रहे हैं 70% से रिड्यूस करके 40% का, and which they have done by FY25. So this is the status as on FY25. Now they are targeting it to decline it to by 25%, तो 1/4 कर देंगे total net of the loan book. So APL Apollo का risk इसमें कम हो जाएगा. And how they will do it? By adding new members like Tata Group, AMNS, which is the steel major, Vedanta metal major, Ashok Leyland, JSW, MG Motors, and Adani Group is also there, Jindal Steel, Kajaria Ceramics, Bajaj Electrical, and so these are their key anchors. And उन्होंने के साथ MOU भी कर रखा है. तो APL अपोलो ग्रुप के साथ 1000 करोड़ का है, देन टाटा मोटर्स के साथ 500 करोड़ का है, देन कच्छ कॉपर अदानी ग्रुप के साथ 300 करोड़ का है. अनदर इज SG मार्ट विच इज अनदर APL अपोलो ग्रुप जो कि काफी तेजी से वो भी ग्रो कर रही है. सो काफी डाइवर्सिफाइड इनका बुक है. यू कैन सी द नेम पॉलीकैप्स एंड ऑल्सो मार्केट लीडर्स आर देयर इनटू दिस. JSPL, देन दे हैव एडेड वेदांता, किर्लोस्कर ऑयल, Redington, ArcelorMittal. So these are good names. So totaling MOU with Anchor Aggregate to around 5,000 crore already in place. So उन्हें 5,000 करोड़ का रन रेट ही लाना है, which is possible within this framework. So they will achieve this by FY27. So further they are expanding their reach by adding at least 6 new location in current financial year and also evaluating moving to tier 2 towns as per Anchor requirement. Because Anchors जो है वो पूरे quasi India presence है उनका. Polycab has dealers on northeast, on south, everywhere. So they will have to reach there. Same is true with Tata Group. And recently they have onboarded Polycab, Whirlpool, and likes of that. So this is the overall setup. So what strategic advantage they have against others? So they have recently received Type 2 NBFC license from RBI on 3rd October 2024. So this is important day because उनकी RBI license में issue था which got resolved on 3rd October 2024. So their criteria for onboarding borrowers is that they should be having a long-term association with the anchors. So at least 5 साल से टाटा मोटर्स को जो सप्लाई कर रहा है उसको ही ये लोन देंगे. कोई नया डीलर है टाटा मोटर्स का, they will not probably entertain them. So that will enhance the underwriting comfort, and they plans to go to step down distributor retailers to further down in supply chain. That will help them boost yield by 1%. जो डीलर या होलसेलर होता है उसके नीचे अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर होता है उसको अगर आप लोन देंगे तो वहां पे आप ज्यादा मार्जिन बना सकते हो. सो दैट्स वेयर दे वांट टू बी. दैट वुड इंक्रीज द यील्ड. सो उनके पास एक कुशन है इफ वो निम को स्प्रेड अगर कंप्रेस हो जाता है तो उसको इन्हांस करने के लिए, बट ऑब्वियसली दिस विल कम एट अ कॉस्ट. सो वहाँ पे कुछ सरप्राइजेस हो सकती है, नेगेटिव सरप्राइजेस. दैट इज ऑल्सो बिल्डिंग अप अ रिस्क ऑल्सो, बट सो फार दैट नंबर इज वेरी लो. आई थिंक दे आर प्लानिंग टू go into that direction. They have not done yet, and they are trying to reduce the cost by using technology. So they want to avoid back-end hiring even as loan book triples. So वहाँ पे उनको employee cost बच जाएगा because they are investing into this into technology. And recently they have initiated their NCD program, the bond program. तो NCD में उन्होंने 50 करोड़ raise किया है at a competitive rate. So they are trying to increase this to 300 crore. So that would be a good diversification on cost of fund side. तो cost of fund side पे भी cost of fund अगर 8.5% पे ले आते हैं और जो 8.5% पे उनको लोन मिल रहा है, which if interest rate would go down, it would further go down. So that is a good place to be in. आप 8.5 पे लोन लेकर के if you are getting 12, then you are making a good spread. So that's the strategic advantage they have because of their closeness with anchors including APL Apollo Group. And this gap arrangement is like that. If Tata Steel का dealer आता है company XYZ Limited, they will give them 2 crore loan, let's say. And if they don't oblige to pay interest on time and all, then they will go to Tata Steel and they will say that please stop their supply. Because that is the understanding between Tata Steel and this company. That if this guy will not play, then Tata Steel will not supply further to them. They will stop the finished good supply to the dealer. So if they will not get their raw material for dealer of Tata Steel, if they don't get Tata Steel finished product, then they will die off. So they will have to pay this lender on time. So that's why so far this company has never made any NPA in last 3 years, and that's the unique point about this. So what are the risks? As I said, the NPAs जो है वो अभी तक तो नहीं है,
but there could be NPA in future that can create provisions, and then it could be the ROE and everything would go down. So the creation of NPA is a big risk. So we have to watch out for their underwriting practices. Cyclicality is important because all the exposures are largely to manufacturing and infrastructure sector companies. So any slowdown in the industry can lead to lower disbursement. Then again, execution risk, which is anyway attached to all kind of lenders, because उन्होंने जो टारगेट किया है 2250 करोड़ से 6000 करोड़, which is around 3x. तो इसमें efficient disbursement होना चाहिए. That is the key things to watch, and that's why important. Regulatory risk है इसमें, that any imposition from RBI can disrupt the business model, and this has happened in past also. So one has to be careful about this, and then you should take these risks in the cognizance, because this company is very young. They are still learning, even though they have hired people from corporate banking background, but still there are regulatory risks which they are exposed to. So one has to listen to what CEO has to say, what management is talking about. So CEO has to establish their credentials in front of minority shareholders to become a good NBFC, because lending is a tricky business, and a CEO and COO has a lot more power and discretionary power also. So a lot depends on the good executive management in this case. So that's a risk. Execution is a big risk. That's why I'm thinking this is a good company. So that's all. I hope आपको हमारी analysis अच्छी लगी होगी. If you have any questions, you can write in the comment. So do your own due diligence, even in this case or otherwise. So when we first look at the supply chain financer, the company was generating roughly 80 crores of annual profit. मतलब कि 20 करोड़ का क्वार्टरली मुनाफा वो कमा रहे थे. For a small financial player, it's respectable, but not yet big enough to demand the full mental bandwidth of a mega conglomerate promoter group like APL Apollo. But look at what has happened since. Fast forward to today, SG Finserve is now delivering more than 50 crore in quarterly profit, which means more than 200 crore without growing quarter on quarter. जबकि ये कंपनी 15% के करीब quarter on quarter अपने AUM को grow कर रही है. Now this company stands at 4500 crores of AUM. So let that sink in. Their quarterly run rate is rapidly catching up to what their entire annual profit pool used to be. This massive scaling is the direct trigger we anticipated. When a subsidiary goes from being a small experiment to generating serious cash flow, it stops being a side project. It demands direct strategic alignment from the parent group. This brings us to the latest development. If you look closely at June 2026 filing, the corporate puzzle pieces are locking into place. First, Deepak Goyal, the veteran group CFO of APL Apollo Group, has officially been appointed as chairman of SG Finserve. Furthermore, Sanjay Gupta's name, the visionary leader behind APL Apollo, has officially appeared as shareholder promoter in June 2026 filing. Why does this matter so much? इसका impact क्या है? दोस्तों, in capital market, corporate governance and promoter bandwidth follows the money. Having the core APL Apollo leadership team assume direct stewardship over SG Finserve shows that the promoter alignment fully logged in at a much larger operational scale. तो ये देखने के बाद आपके मन में एक सवाल आता है कि क्या ये growth sustainable है? To understand this, you have to understand how they lend. SG Finserve operate at a highly strategic technology-enabled supply chain business model. What makes them unique is that their relationship with borrowers are not transactionals. This isn't simple disperse and forget model. Instead, they build long-term partnership embedded directly into their value chains of major industrial ecosystem like Tata Steel, Tata Motors, APL Apollo, Shyam Metallics. Because it's highly digitized, the operational cost of managing thousands of invoice-backed short-term transactions is remarkably low. So the cost to income is less than 15%. Also, it's a closed loop financing, यानी money directly move करता है between anchors and their dealers. Capital turnover very rapidly, driving up the return on equity. The deep integration creates immense stickiness. A distributor is highly unlikely to default on the financier who literally keeps their raw material pipeline flowing. When business quality, aggressive scalability, and bulletproof promoter alignment converges, it validates why we practice deep dive fundamental investing in the first place. The original SG Finserve thesis has played out step by step. We will keep tracking their AUM growth, asset quality, and how the APL Apollo ecosystem continues to leverage their massive strategic financial arm. Let me know in the comment below
Did you track this transaction from annual profit scale to quarterly profit scale? What are your thoughts on Deepak Goyal's appointment as chairman? And make sure to subscribe for more institutional grade value chain breakdowns. I will see you in the next video. Thanks for watching.